alaikum everyone. I hope all of you are well. मेरा नाम हया फातिमा इकबाल है और मैं हाजिर हूँ फुलब्राइट वुमेन पॉडकास्ट की एक एपिसोड के साथ जिसमें मेरी गेस्ट हैं हबीबा फैज. Habiba is a master's in nutritional sciences from Rutgers University, New Jersey. She is currently a clinical research associate at the Ocular Image Research and Reading Center, which is also called OIRRC. It's based in Islamabad. Habiba, thank you so much for joining us. Um, हबीबा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि न्यूट्रिशनल साइंसेज में मास्टर्स होने का क्या मतलब होता है, क्योंकि आपने मुझे बहुत एक्सप्लिसिटली एक दफा बताया था कि मैं मील प्लान्स नहीं बनाती, मेरा वो काम नहीं है. तो आप Yeah. बताएं कि आपका काम क्या है, फिर करती क्या है? Okay, so first of all, thank you, Aya, for having me here on this podcast. Yeah, so I don't have the dietitian or the nutritionist के credentials होते हैं. मेरे पास वो certification नहीं है, so I cannot make meal plans for anybody. Because whenever I say I am a nutrition science graduate, सबसे पहला perception यही जाता है कि मैं अब meal plan बना के दूंगी. My friends have asked for it, my family has asked for it, so that's not true. So, but I basically do is research part of it. So, जब आप देखते हैं articles वगैरह या if you see the news कि Mediterranean diet आई है which is really effective या saturated fats they are bad for you. So, उसके पीछे जो research हो रही है वो nutrition sciences में हो रही है. So, I basically do that kind of research. फिर वो आगे आती है and then उसके accordingly a nutritionist can make a meal plan for you according to your needs. So the research part of it, I'm more included in that area. I see. तो फिर ये जो रिसर्च होती है, फॉर एग्जांपल, यानी जब हम छोटे थे तो अंडे बुरे थे और अब हम बड़े हो गए तो अंडे सही हो गए ना, एक्सेप्टेबल, उनको वापस खानदान में अलाउ कर दिया गया है, राइट? एंड सो इट समटाइम्स, आई मीन ऑब्वियसली उसमें एवरीडे तो ये होता है कि इन लोगों का यही है, राइट? रिसर्चर्स आर समटाइम्स ब्लेम्ड फॉर Yeah. इट आल्सो, बट आल्सो इट सीम्स लाइक it sounds like a field that requires a lot of time in doing the research as well. मतलब sounds like कि कोई लंबी गेम है, और ये रिसर्च फिर कहाँ पे हो रही होती है? मतलब ये रिसर्च कहाँ, मतलब किस तरह की स्पेसेस में ये रिसर्च होती है जो आप लोग करते हैं? और दूसरा, ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स पे रिसर्च होती है? मतलब ये एनिमल्स पे होती है, ह्यूमंस पे होती है, पहले किसी पे होती है, बाद में किसी पे होती है? ये आप जरा हमें तफसील में बताएं कि इस फील्ड की बारीकियां क्या है, and yeah, how does this research work that you do? So yeah, definitely. I think it takes time. With the time and more technology and advancement, नई चीजें discover होती हैं, and then पुरानी चीज जो है, you do research on that, and then you say, oh, अब इसमें तो ये नई चीज आ गई, and then you say, no, this is better. फिर उसमें और research होती है, then you say, no, this is better. तो वो चीजें change होती रहती हैं with time. And regarding the research, it's done on both animals and humans. Okay. Animal research भी चल रही है. First of all, so what happens in research is, first you do your research in lab, and then वो animals पे shift होती है. जब वहाँ से promising results हमारे पास आते हैं, and you see कि it's not harming them, और हमारे पास कुछ positive results आ रहे हैं, और हमारे पास benefits ज़्यादा हैं as compared to the risk, then we move on to the human part of the research of it. तो फिर हम वो humans पे test करते हैं, उसके लिए हमारे पास clinical trials होते हैं, and that's the part which I was associated with. Many human research, clinical research जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने की है. And definitely it takes a lot of time. कुछ trials जो होते हैं, they are for 2 weeks, for 3 weeks, कुछ years के लिए होते हैं, and there are a lot of complexities क्योंकि even in human bodies and in animals, all the systems, everything, it's highly interrelated. So आप एक चीज को दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते. So you have to look at the bigger picture as well as the smaller picture. So of course it's really complex. I would agree with you on that. And so, what lab were you working in जब आपने मास्टर्स पे गई? What lab were you working in? What Who were you working under? Like, who was your supervisor? And जब आप वहाँ पे थी तो आप लोग किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे? आपने एक्टिवली फिर किस तरह की रिसर्च में हिस्सा लिया जब आप वहाँ पे 2 साल के टाइम के लिए अपने एमएस पे थी? Yeah, so my lab wasn't directly under the nutrition sciences department. वो kinesiology department के अंदर आती थी. ये क्या So होता my है किनीज? पहले तो आप हमें that's इसको basically प्रोनाउंस करना yeah, सिखाएं, उसके बाद फिर हम उसके मीनिंग पे आते हैं. uh, exercise physiology, basically exercise. ठीक है, Kinesiology is, yeah. किनीजियोलॉजी, ओके, सही So है.
My supervisor was Dr. Stephen Mallon. उससे पहले मैंने 2 और labs में भी rotation की थी. I knew that I did not want to work with animals. मुझे नहीं पसंद था because mostly at the end of an experiment you have to euthanize them, which I did not really like. तो मेरे लिए ज़्यादा interesting I would say humans के साथ काम करना, because you know you're talking to people, you're interacting with them, you're learning new everything, talking to people. So another reason for me to join this lab was I felt like मेरे communication skills इतने अच्छे नहीं हैं, and I wanted to work on that, and this involves talking to people. So इसलिए भी मैंने ये lab join की थी. So basically research, it was all clinical research. It did not only include nutrition related cheesein, but also exercise related cheesein. So the people that we were working with, we were giving them standardized meals before their testing. We were testing their glucose, insulin. Mostly these people, they had obesity, ya phir unko diabetes thi. And then we were also making them exercise. So they were running on treadmills at like 6, 7 a.m. And I used to make fun that I make old people run on treadmill early in the morning, Oh and they all God. hate me for it. So this was basically the research. We did not do weightlifting वगैरह वाली exercises. We just did aerobic exercises on treadmill. सही। So this was what our lab was focused on. और ये आपके सामने, मतलब ये लैब की स्पेस में ये सब होता है, मतलब ये नहीं है कि जो आपके लोग हैं जो रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने घर में ट्रेडमिल पे नहीं भाग सकते, फिर देन इट हैज टू बी, does it have to be Yeah. supervised by you while So during COVID, we had to do that because we could not ask people to come in. But मैं उस टाइम पे नहीं थी, वो मेरे से पहले हुआ था. So during my time, I was in New Jersey, and some of the people, they also were from New York. So New York's and New Jersey ka commute was like an hour, or it could be 2 hours depending on the traffic. So if it was really necessary, we would ask them कि आप घर पे करें, but then take us on call throughout that time. उसमें basically हर 5 minutes बाद we had to get their heart rate. उसके लिए we had given them watches. So उनको हम साथ साथ मॉनिटर करते थे, but we would generally prefer कि वो अगर आ जाएं. right. Yeah, so supervised days भी होते थे और unsupervised days भी होते थे. Unsupervised days पे वो खुद record करते थे सब, but then on supervised days we would ask them to come, but if they can't, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, तो फिर हम उनको कॉल पे साथ रखते थे. सही है। और आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे थे, मतलब यानी अगर आप किसी को स्टैंडर्डाइज मील दे रहे हैं और किसी को डायबिटीज है फॉर एग्जांपल, और आप उनको सुबह में भगा रहे हैं या रात में भगा रहे हैं, तो आप मतलब आपका यानी क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस कह सकते हैं, would that be the like an accurate word in your world, but like what were you like, what were you trying to prove or disprove in a way, like it's Yeah. a very oversimplified question, but हमें तो भाई नहीं पता. Yeah, so basically standardized meal देने का पर्पस हमारा ये होता था, वो हम before test देते थे जो हम करते थे, और उसका पर्पस ये होता था कि if somebody is eating a really high salt meal, तो वो affect ना करे टेस्ट को, तो हम इसलिए हर किसी को same meal देते थे ताकि salt affect ना करे या sugar affect ना करे. So yeah, so basically in any research you have primary endpoints and then secondary endpoints. So एक पर्टिकुलर चीज हम नहीं देख रहे थे, डिफरेंट चीजें थी. इंसुलिन कैसे अफेक्ट हो रही है, ग्लूकोज कैसे अफेक्ट हो रहा है, द वे योर बॉडी इज बर्निंग फ्यूल वो कैसे अफेक्ट हो रहा है, फैट्स कैसे बर्न हो रही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बर्न हो रही हैं. स्विच जो होता है, बेसिकली आपकी बॉडी में स्विच होता है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फैट्स. जब कार्ब्स आपकी सारी यूज हो जाती हैं तो फैट बर्न होना शुरू हो जाता है. वो स्विच कितना जल्दी हो रहा है, fat mass, lean mass, there were a lot of things that we were basically working on. And then um, I wasn't personally working on this, but we were also taking their logs for their cognition, for their brain health, for their sleep schedule. So वो सारी चीजें भी, they were all then together collected, or lab में, since there are different people, so everybody was working on a different aspect of it. Yeah, so first, as I mentioned before, this was a lab in kinesiology. So अब भी जो इनके projects थे, वो mostly they were focused on exercise aspect as compared to nutrition. So one thing is, even like at Rutgers, the kinesiology and nutrition department, they were under different schools, which is kind of stupid because nutrition or exercise, they usually should be together, right? I think they both come together. For me, the project that I worked on, both, it had been done in the past, but we still keep the data. We keep the bloods, we keep the biospecimens of people.
कि अगर फ्यूचर में अगर हमें कोई रिसर्च करनी पड़े. So that project was basically exercise plus we gave them low calorie diet. So we were looking at both. So I specifically asked my supervisor कि मुझे nutrition aspect भी चाहिए अपने project में. That's why फिर मैंने इस particular project पे काम किया था जिसमें diet भी था और exercise भी था. Very interesting. Zabardast. But when I joined, this was already completed. So actively जिनमें मैंने like participate किया है, they were the ones that I've already explained to you before. राइट एंड ऑब्वियसली फिर ये भी है कि रिसर्च की दुनिया में मतलब अगर जहाँ पे लैब्स की स्पेसेस हो वहाँ पे हर वक्त आप अपनी मर्जी से एक नया प्रोजेक्ट तो नहीं स्टार्ट करते स्पेशली इफ यू आर यू बिल्कुल. नो मास्टर स्टूडेंट आप इतने Masters, ऐसे it really बच्चे हैं depends on the funding and time. You can't really हाँ व्हाट start योर a new project. सुपरवाइजर इज डूइंग Yeah. ऑलरेडी सही है तो मुझे So like to get that experience of how clinical research happens, I participated in the ongoing trials. But then for myself, for my project, I worked on a trial that had happened in the past, but it included exercise or diet wala aspect as well. सही है बिल्कुल ठीक एंड टेल मी हबीबा कि आप जब अमेरिका में थी और जब आप लैब में काम कर रही थी और जब आप ये डायबिटीज वाली रिसर्च भी हो रही थी और एक्सरसाइजेस कराई जा रही हैं सबसे यू कलेक्टिंग डेटा यू आर स्टडीइंग पीपल्स लाइक you know you're collecting different data points from people as you were doing this आपको आई मीन साउंड्स लाइक एन अमेजिंग वर्ल्ड जहाँ पर आपको एक ऐसे मौके मिले हैं कि आप ये सब कर सकते हैं और Yeah, यू नो क्लियरली एथिक्स भी कंट्रोल में है कि इंसानों पे रिसर्च करने की इजाजत दी गई है तो एथिक्स बोर्ड बैठा है और उसने अप्रूव किया है वो सब चीजें हुई हैं yeah. talk about like what was amazing in that world you know as this young person who just went और आपको जाहिर एक मौका मिला आपने स्कॉलरशिप हासिल की वो भी एक मुश्किल प्रोसेस होता है बट समटाइम्स ये भी लगता है कि बस मिल गई है तो अब तो आगे इजी है राइट बट आई थिंक you talk about the amazing things in that environment like as a student but also आप थोड़ा ये भी बताएं कि आपको चैलेंजेस कहाँ हुए वो पढ़ाई करते हुए और आपको कहाँ लगा कि मुझे तो ये चीजें नहीं आती बिकॉज आई थिंक ये भी होता है कि जब Okay. हमें पता चलता है कि ये गर्ल जो है ये मास्टर्स में चली गई है तो हमें लगता है कि बस अब तो पार्टी है राइट बट आई थिंक कभी कभी हर वक्त पार्टी नहीं हो रही होती कभी कभी आप रोजाना रो रहे होते हैं कि मैंने क्या चूज कर लिया है मुझे नहीं आ रहा मुझसे नहीं हो रहा सो टेक अस थ्रू बिल्कुल. दैट जर्नी प्लीज Yeah, so I think let's start with the amazing things. ओके एक चीज you have already mentioned that I got the chance to work in a lab जिसमें clinical research हो रही थी. I think मैंने बहुत ज़्यादा learn किया वहाँ से क्योंकि उससे पहले मैंने सिर्फ clinical research का नाम सुना था. I just knew कि ये humans पे research होती है मुझे इसकी complexities का नहीं पता था. I did not know कि process क्या होता है. Ethics committee वगैरह ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ जाके इन चीज़ों का आइडिया हुआ. So the fact that I got a chance to work on it वो मेरे लिए बहुत अच्छा था. Secondly, while I was in the lab, I was working on writing my papers, मैंने posters बनाए, and then I got the chance to present those at 3 different conferences. One was in Colorado, एक जो है वो Maryland में थी, and then there was another one in I forgot the place, but मैं 3 इतनी conferences जगह में गई हूँ कि मैं मैंने भूल गई हूँ कि मैंने कहा exactly नहीं मैंने brag करना था बस वो मैंने कर नहीं दिया. वो जरूरी है क्यों नहीं भाई हमने ब्रैग नहीं हम तो बता रहे हैं अपनी अचीवमेंट्स कोई नहीं तो उन कॉन्फ्रेंसेस में फिर आई मेट अदर पीपल हु आर वर्किंग इन द सेम फील्ड और उससे मैं काफी ज्यादा फैसिनेट हो रही थी बिकॉज आई डिड नॉट नो that there are people around the world who are working with this in this area और वो इतनी छोटी छोटी चीजों पे काम होता था that you can't even think of this कि इस पे कोई रिसर्च भी कर सकता है इस तरह के काम होते थे. Thirdly, I think my supervisor he was an amazing person. मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ जो है उसमें ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई यूज्ड टू से टू हिम कि आई थिंक मेरी पर्सनल ग्रोथ पिछले सालों में इतनी नहीं हुई जितनी मेरी 2 years में इधर होगी विद यू. ही वाज जस्ट सो पेशेंट ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग. मैं पैनिक करी होती थी कि बस अब तो क्या अब तो मेरी बेइज्जती होगी बट ही वाज ऑलवेज सो अंडरस्टैंडिंग. सो मेरी उस तरह से पर्सनल ग्रोथ काफी ज्यादा हुई है. एंड देन ऑफ कोर्स वर्किंग इन अ लैब एनवायरनमेंट जिसमें मेरे साथ PhDs भी थे पोस्ट डॉक्स भी थे. दे वर ऑल रियली हेल्पफुल. तो उस वो that was also a positive factor. um Another thing like outside of work outside of lab was living alone managing everything on my own.
आई थिंक इधर रहते हुए पाकिस्तान में व्हेन यू आर विद योर पेरेंट्स, जब आपके एग्जाम्स हैं नोबडी लेट्स यू डू एनीथिंग कि ओ एग्जाम्स हैं अब तो खाना भी कमरे में मिलेगा, सब कुछ जो है वो मिलेगा आपको हुआ हुआ। वहां पे मैं एग्जाम से पहले आखिरी दिन तक काम भी कर रही होती थी, मैं खाना भी बना रही हूँ, मैं ग्रोसरी भी कर रही हूँ। सो जस्ट मैनेजिंग एवरीथिंग टुगेदर, Right. आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव चीज थी। Uh, to not be treated like a टॉकिंग, princess, is या या something we learn. एग्जैक्टली। हाँ, negatives I think काफी struggle थी। There were a lot of things जिसमें I felt I'm lagging behind. Communication skills में I think there was a communication gap. Americans का थोड़ा different style होता है, हमारा चीज़ों को explain करने का different style होता है, so वो gap fill करने में मुझे काफी time लगा। अभी भी I wasn't perfect at it. I could have worked more if I had more time. So I think एक चीज तो ये है कि we're not really open in communicating things, क्योंकि start से थोड़ा सा ये होता है कि बताना नहीं है, चीजें नहीं बतानी है, अपने तक रखनी है, तो वो communicate शायद सही से होती नहीं थी, but you think कि अगले को पता है, he understands, लेकिन वो understand नहीं कर रहे होते। एक तो इस तरह से क्या था। दूसरा, if I'm telling them something कि this is going to happen this way, बट वो शायद मैं इस तरह से बता रही हूँ, they're going to understand it in a different way कि वो अच्छा नहीं, वो उस तरह से होनी थी। So maybe like use of words, vocabulary, tone different है हमारी, तो वो बात पहुंचते पहुंचते थोड़ी ट्विस्ट हो जाती थी, मतलब मैं इस तरह से कह रही हूँ और उनको लग रहा है वो इस तरह से हो रही है, तो उस लिहाज से भी कम्युनिकेशन गैप था। I see. कि फिर बाद में मैं वो चीज उस तरह से कर लेती थी एंड इट वाजंट सपोज्ड टू बी दिस वे, बट मैंने अंडरस्टैंड ऐसे की थी, तो इस वजह से फिर वो थोड़ा सा गैप आ I जाता था see. कि ओ इट वाजंट सपोज्ड टू बी लाइक दिस। सेकेंडली आई थिंक एज अ प्री मेड स्टूडेंट हमें जो है मैथ्स, स्टैट्स वगैरह ये सब्जेक्ट्स इतना गौर नहीं किया जाता यहाँ पढ़ाने पे, विच आर रियली इम्पोर्टेंट। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया अपने रिजल्ट्स को रन करने में, स्टार्ट्स वगैरह करने में, जिसमें मेरी लैब मेंबर्स ने मेरी काफ़ी हेल्प की, बट दैट्स समथिंग दैट आई फेल्ट कि बहुत ज़्यादा लैगिंग है। अभी भी मतलब आई कुड स्टिल रन द टेस्ट, बट आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, Right. पीछे उनके क्या हुआ। क्योंकि हम तो मतलब अक्सर मतलब मैथ को अवॉइड करने के लिए भी प्री मेड लेते हैं ना, लेकिन स्पेशली एग्जैक्टली कि इंटरमीडिएट में मैथ्स तो। नहीं पसंद थी इसलिए प्री मेड में चले गए, विच हाँ, शुड नॉट बी द केस। राइट। क्योंकि वो आपको हर पॉइंट पे हर फील्ड में चाहिए होती है, स्पेशली नाउ दैट यू सी हर जगह एआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिल्कुल। एवरीथिंग इज जस्ट अब सो कॉमन, सो आपको चाहिए होती है। राइट, You can't just sit in a lab and work and not present your results to the outside world. You have to show it to राइट, them. राइट। और आप उसके डेटा लिए कलेक्ट आपको कर रहे हैं तो आपको। आपको उसी फॉर्म में दिखाना है, स्टैट्स की फॉर्म में, मैथ्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, जिसके लिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए। Thirdly, I think it was really hard because clinical research is no joke, जो कि मुझे वहां जाके पता लगा। हाँ, हाउ Animal सो। research में animal research में they're just animals. You can run the experiment at 10 a.m. You can run the experiment whenever you're free, right? But with Oh, because humans, they're you always free, like they don't have any commitment. yeah, They but always with humans, oh, आपको उनके schedule के मुताबिक चलना है। हाँ, So I was like waking up at 4 a.m., leaving the house at 5 a.m., 6 a.m., getting the bus in minus 20 degrees centigrade, minus 25. फिर रोज सुबह जाते हुए अपने आप को क्वेश्चन करी होती थी कि मैंने क्यों चूज किया ये, बट आई स्टिल डिड इट। कहाँ एंड कहाँ आ गए। एग्जैक्टली के आई डोंट रियली लाइक विंटर्स, मुझे ठंड नहीं पसंद, सो माइनस 20 में सुबह के 4 बजे बाहर निकलना वाज नो फन। या, और फिर रात को आई वाज कमिंग बैक एट लाइक 6 p.m., 7 p.m. हाँ, सो टाइमिंग्स वर रियली क्रेजी, राइट, ये राइट। एक चीज भी थी। या आई थिंक ये सर्दी काफी वो है। आई थिंक मतलब जर्सी में जहाँ पे आप थी वहाँ तो और ज्यादा सर्दी होती है। मुझे याद है कि या हाँ, ऐसे लाइफ में कभी कभी मोमेंट्स होते हैं जब आप शदीद, अगर आपको सर्दी नहीं पसंद, विच इज ऑल्सो मी, आप कभी कभी सख्त ठंड में कोई काम करने जा रहे होते हैं और आपको होता है कि मैंने ये क्यों किया है। मुझे याद है एक दफा आई हैड टू शूट एट द सी, बस समंदर के किनारे शूट करना था। -20 नहीं था मेरे ख्याल में उस दिन, सिर्फ -8 था, और सख्त हवाएं चल रही हैं और कैमरे का बिल्कुल। बटन दबाते हुए, और मुझे बोलता कि ये मैंने क्या क्या पढ़ी थी जो यहाँ पे आए हैं। आई मैं थिंक भी ये, रिग्रेट करती थी कि मैं कुछ ऐसी फील्ड चूज कर लेती कि मैं घर से बैठ कर काम कर लेती, मैंने क्यों लैब हाँ, में जाना चूज किया हाँ, इस हाँ। टेम्परेचर में। और फिर इंसानों के साथ चूज किया क्योंकि मतलब ऑब्वियसली यूथनेजिया नहीं पसंद था जानवरों पे होते हुए, Yeah, तो and फिर then at 6 a.m. you have to be nice to people, you have to talk to them, smile करते हुए, which was really hard. right, wow, that's amazing. And so this is really good, I think, to know कि
there was also a gap that you had to kind of learn, मतलब एक learning का gap था जो आपको सीखना था. And I mean, obviously, I mean, I think like it shows like your great humility that you say कि Yeah, वो so I अभी भी think मुझे ठीक से समझ नहीं another आता. I'm thing, sure like you know you I'm sure like you know a lot of things also. ऐसा नहीं है कि बस ये नहीं आता, but like yeah, I mean there was a gap that you yourself had to like overcome. yeah, so regarding the gap, another thing that I forgot to mention was applicability of what you're reading in the books. That's Hmm. something that was really lacking. I think in our education system, it's more about just learning things, apply itna nahi kiya jata. But then wahan pe, this was a huge gap where I had to apply things. Things were happening like during an experiment, during a test, something would go wrong, and I would just start panicking कि अब क्या करना है shit. ये तो इसके लिए I wasn't prepared for this. So applicability, मतलब मैंने पढ़ा हुआ है कि क्या करना है, but I'm not able to apply it. I would just start panicking. So applicability of scientific knowledge that you have is really important, that I really, really, really lagged in. और उस पे अभी there's a long way for me to go to be Well, not perfect. I don't think you can ever yeah, be perfect, yeah. but But to yeah, be more that like to be less panicky about it, basically, I yeah, think is the key. Right. But yeah, you've only done your first masters right now, Habiba. Like yeah. there's so many things you're going to do. And Uh, then it was like masters maybe first semester and half of the second semester I was just taking courses. So like for 1.5 years I was in the lab, not the whole 2 years. right, right, right. Because obviously शुरू में आपको दूसरी चीजें पढ़नी है. Courses Uh, लेने होते right. हैं. तो अप्लाइड बायोसाइंसेस से आपको न्यूट्रिशनल साइंसेस में जान मतलब आप जो गई अपने मास्टर्स में, ये कनेक्शन किस तरह बना एंड व्हाट मेड यू like I think what I'm trying to know is what made you interested in nutritional sciences, like why this subject out of the the many others that you could have studied after having done a bachelor's in applied biosciences. Yeah, so I think there are two main reasons for this. The first one is my own personal experience, because during that time, जो मेरा bachelor's वाला time था, उसमें I was dealing with body dysmorphia and eating disorder, which wasn't clinically diagnosed. I just figured it out myself. So उसके लिए I was doing a lot of research on nutrition for my own self, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा interest develop हुआ था in this field. And then secondly, as I mentioned before, that my parents, they have diabetes, my grandparents had it. So this was my second motivation. क्योंकि I knew that there's something wrong at the nutrition level, since I was also doing my own research. So इस वजह से मेरा interest develop होना शुरू हो गया था towards the third year of my bachelor's, I would say. And then that's how I decided that this is something that I want to pursue for my master's and आगे for my career. And so, what were your own struggles like around, around body dysmorphia? So of course, it like started from bullying, because I was overweight. It was around the time when I was in my school and then the college time. My parents, my family, they were actually really supportive, because उस bullying की वजह से I used to cry, I used to be so disheartened, और मैं बहुत ज़्यादा low रहती थी, but they were always really supportive. But of course, what you're getting from outside really affects you, especially वो teenagers का जो time होता है. So I was always like thinking about कि oh मैं weight कैसे lose कर सकती हूँ, मैं कम खा सकती हूँ, कैसे कम खाऊं. But the more you're stressing about it, the more you want to eat, क्योंकि आप stress eating भी करते हो. तो I think it was around like 4 or 5 years जिसमें मैं overweight थी, उसमें मैं ज़्यादा weight gain करती गई, overshoot हुआ. There was a time when I was at my maximum, जहाँ पे मुझे most bullying face करना पड़ी. And then I think that was my motivation कि नहीं, this is too much now. I have to lose weight. इससे ज़्यादा अब मैं bullying बर्दाश्त नहीं कर सकती. So initially, when I decided कि अब मुझे जो है वो इसके लिए कोई action लेना है, so I started eating less. And first thing I did, I brought a treadmill at home. So I thought कि running would be the solution to all of the problems. Cardio करूँगी, इससे weight lose हो जाएगा उससे. So I started eating less. Over time मैंने जो है अपना sugar वगैरह कम की, खाना वगैरह कम किया, and then it got to a point where I was eating like half roti in the whole day, half bread Oh, in breakfast. And then I was running like 1.5 to 2 hours on the treadmill. गर्मियों में 40 degrees में
I would still be running on the treadmill, पसीना आ रहा है, सांस नहीं आ रहा, but I would still be doing it क्योंकि मुझे करना है, मुझे 2 घंटे भागना है, आज का 2 घंटे पूरे नहीं हुए मेरे। Events पे I would miss out कि मैंने आज का अपना जो है वो खाना दोपहर का खा लिया है। If I go on event, people would ask me to eat, so I have to miss out on this event. Otherwise, I would eat because I know I don't have that control कि मैं कहूँ कि मुझे नहीं खाना, I would eat it. Okay, सही है, I see. Yeah. Yeah. So that's why I would miss out on going to events या बाहर कहीं भी जाना है कि मुझे खाना ना पड़े. Those people who are saying that you're fat, you're overweight, started saying, "Oh, you're too skinny, you're too pale, you were good before. ये क्या किया है? पहले बेहतर थी." Wow. And then I was like, "Okay, people are never happy. This is Then not happening. I can't make them happy." So I think weight lose initially जब मैंने करना शुरू किया, it took me a year to go to the minimum weight, and then उस पे भी I wasn't really happy. I wanted to lose more weight, but of course मेरी body में और capacity नहीं थी. There wasn't any more fat to lose. मेरे vital organs बचे थे, वो उनको lose नहीं कर सकती थी, so वो lose हो नहीं रहा था. Right. But then I had, sorry. So, sorry, I just cut you off. I was just asking, like when you did lose weight and you became thin, you must also be praised for being thin a lot. I think मतलब कुछ लोग तो कभी खुश नहीं होते, but like पतले होने की तो एक अलग एक elevated level है, मतलब हमारे मुल्क में, especially around younger people, like other young Yeah. girls and boys who really like, people are very fat phobic basically. Yeah. बड़े तो Yeah. कंफ्यूज है So ना, पतली लड़की भी नहीं पसंद, मोटी लड़की भी नहीं, पता नहीं क्या right. पसंद है उनको, लेकिन यंग लोग तो आई थिंक पीपल रियली लुक अप टू लाइक थिन पीपल, लाइक पीपल हु वर्क आउट एंड स्टफ, सो यू मतलब क्या क्या Yeah. तारीफें भी मिल रही थी उस वक्त? Yeah, I think for them I was super healthy because I was working out. I was taking my own meals with me with like a chicken piece and some salad on the side. So I was being really fit and healthy. So I was praised for it. I went to a few doctors as well क्योंकि मुझे health issues आ रहे थे. They all really praised me for it कि आपने इतना weight lose किया है. So it was really encouraging for me. That's why I wanted to do more. कि yeah, this is good. I need to lose more weight. Everybody's most of the people they're happy. और जो नहीं है वो पहले भी कुछ नहीं थे, तो that doesn't matter. मतलब इवन डॉक्टर्स राइट, लाइक Yeah, yeah. ओके, सही है। तो अब आपके वाइटल ऑर्गन्स रह गए हैं, आप पतले होने की मजीद कोशिश कर रहे हैं, मजीद नहीं हो पा रहे क्योंकि कुछ नहीं, एज यू से कि कुछ बचा नहीं था, बिल्कुल। राइट? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आई वॉज एंग्री ऑल द टाइम क्योंकि ऑफ कोर्स मैं हाइपोग्लाइसीमिया में होती थी, मेरे सर में दर्द हो रही है, आई वाज सो लेथार्जिक और मुझे वो क्लाउडी हेजी सा हर टाइम फील होता था। आई वाज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फूड, सोते हुए जागते हुए क्या वो, और वो फिर वो फीलिंग आती थी मुझे कि, और वन मोर थिंग, रात को सोते हुए आई यूज्ड टू वॉच दोस मकबैंग वीडियोस जिसमें वो ढेर सारी फूड खाते हैं। दैट यूज्ड टू मेक मी फील सो गुड कि दे आर ईटिंग, वाओ दे आर ईटिंग। तो मैं वो जो वीडियोस बहुत ठूस ज्यादा रहे देखती होते हैं थी। मकबैंग वीडियोस में, राइट? इट्स लाइक या आई मैं वो एक्चुअली देखती थी या टू सेटिस्फाई माई सेल्फ। I mean, I'm such a boomer. Like, it also says something about my age, basically. I, Habiba, I just discovered mukbang videos literally 2 weeks ago. या And like, as a grown-up adult person, I was just disgusted by them, and I was like, मैं कभी नहीं देखूंगी, ये तो पता नहीं क्या है. But नाउ आई वॉच देम और मैं देख कहती हूँ मैं किस तरह देखती थी ये वीडियोस, दे आर सो डिस्गस्टिंग। यू जस्ट पुटिंग इन ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फूड इन योरसेल्फ, हाउ कैन समबडी there's डू दैट? something so primitively off about them, right? Like, there's something that makes you feel like I don't know what's wrong, but ये मुझे शायद नहीं देखना चाहिए. Like, I couldn't बिल्कुल। place it, but मुझे बंद कर दो बस. But you used to अब मैं नहीं obviously, देख सकती, you बट can't. आई यूज्ड टू, वो सीरियल्स ज्यादा ज्यादा खाते थे हाँ, और आवाजों के साथ. ब्राउनीज बड़ी बड़ी हाँ, आवाजों के साथ। मैं वो रात को देख के सोती थी क्योंकि wow, मुझे okay. सेटिस्फेक्शन होती थी, और जब भी मुझे सही भूख लगती थी दिन में भी तो मैं वो वीडियोस देखती थी जिसमें वो खाना खा रहे होते थे, So, wow. इस So टाइप you की would वीडियोस। watch other people eat instead of या like putting food या inside yourself, obviously. Right, ठीक है। तो एग्जैक्टली। गुस्सा आ रहा है, कमजोरी है, दिमाग सही से नहीं चल रहा है एसेंशली, और हम रात या को मकबैंग वीडियोस देख के सो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई? अब ये तो ये सब ये चल रहा है, मतलब दैट साउंड्स लाइक अ, एंड बाय दिस टाइम आप यूनिवर्सिटी आ चुकी थी, आप बैचलर्स मैं हैं। ये या सही है। या तो एक तरफ मतलब पढ़ाई चल रही है, एक रिगरस जिंदगी है, यू आर हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स एटसेट्रा, सो ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग, बट लाइक यू आर अ लिटिल बिट, like a little bit irritated all the time, it sounds like.
ठीक Yeah, है। and that is only showing up in front of my family. Nobody else knows about it. My mother ओके, has to deal with it. सही है, ओनली अम्मी, सही है, ठीक है, क्लासिक। Yeah. क्लासिक सही है ना, हाँ ठीक है, She सही has है। to deal with the tantrums and the hypoglycemia and everything. ओके, सही है, ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर this was going on. I did not know कि कोई issue है. I thought this is normal. This is how it's supposed to be when you're eating less, when you're thin. But it wasn't, of course, normal. Um, so I also used to watch these workout videos on YouTube, and there was this YouTuber. I watched her video. Who used to weight lift. She had like an amazing body. I wanted body like her. One day she posted a video about how unhealthy she was when she was doing that, and ओ she भाई, was not happy. She was not happy at all. और वो हर टाइम खाने के बारे में सोच रही होती थी. Same things जो मैं feel कर रही थी उस टाइम पे. ओके, Um, and then she said that she realized that she has anorexia or body dysmorphia. And then she shared a link to a book. कि इस बुक को मैंने रीड किया एंड देन आई रियलाइज्ड एंड देन आई स्टार्टेड ईटिंग और जिस तरह से भी वो उसने रिकवर किया. सही है। और सो उस किताब का क्या नाम है, इफ एनीवन वांट्स टू सीक हेल्प फ्रॉम दैट बुक आल्सो? या इट्स कॉल्ड नो पीरियड नाउ व्हाट. नो उसका आगे भी पीरियड, नाम है वो मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन स्टार्ट का नेम है नो पीरियड नाउ व्हाट. ओके, सही है, ठीक है। या सो ओके, सो यू गेट इनिशिएटेड विद दिस, मतलब जो खातून जिनकी बॉडी आपको पसंद थी या वो दैट वीडियो केम आउट ऑफ नोवेयर. लाइक आई स्टॉप्ड आह, फॉलोइंग हर बीच में थोड़ा सा बट देन वो वीडियो एकदम से आई. मैंने देखी. मैंने कहा वाओ दिस इज रियली रिलेटेबल. इंटरेस्टिंग, सही है। एंड डिड यू रीड द बुक देन आल्सो दैट शी So हैड रिकमेंडेड? I yeah so I pressed the link to the book. It wasn't free. It was paid. My sister paid for it because she also knew that what I'm going through isn't normal. She always asked me to eat. खा लो खा लो खा लो. मैंने खाती थी. वाओ, So I shared the link with her. So she instantly just bought the book for me. हम दोनों ने read की. ओके, And then उसमें solution ये लिखा था that you have to go all in. You have to eat whatever you want. Just leave working out for some time. Just let your body be satiated. जब उसको पता लग जाएगा कि मुझे फूड मिल रहा है वो starvation mood में नहीं होगी. Things will go back to normal. ओके। So that was a really hard decision ये तो बहुत to start. खतरनाक नसीहत है कि अब हम सब Exactly. कुछ खाएं और वर्कआउट छोड़ दें जिस पे हमने इतनी मेहनत की इतनी है। मुश्किलों से वेट लूज किया है और हाँ, अब आपको जो है वो you have to let it go वापस गेन करना है which was really hard. हाँ, वो डिसीजन लेने में मेरे ख्याल है मुझे कोई महीना लगा कि मैंने खाना है अब हाँ, सब कुछ. सही है, ठीक है। बट देन आई डिड. मैंने स्टार्ट में थोड़ा ज्यादा किया फिर मैंने वर्कआउट भी छोड़ दिया. मैंने हम्म, खाना शुरू कर दिया और स्टार्ट में सिंस मेरे सैटाइरी सिग्नल दे वर ऑल डेड. मैं हम्म, टाइम पे खाती थी ना कि अपने सिग्नल सैटाइरी सिग्नल्स पे. सो आई वाज लाइक ईटिंग अ होल केक इन वन सिटिंग एंड आई वुड स्टिल नॉट फील फुल. मैं पूरे बड़े बड़े वाले पैक्स खा जाती थी स्नैक्स के. आई वुड हम्म, स्टिल नॉट फील फुल. आई हम्म, थिंक इट टुक मी लाइक 6 months. हम्म, उसके बाद मुझे सैटाइरी की फीलिंग आती थी कि अच्छा नाउ आई एम फुल. अब मैंने इतना खा लिया है. नॉर्मल इंटुइटिव ईटिंग फिर मैंने स्टार्ट कर दी उसके बाद. सही है। ये सिग्नल्स आप हमें जरा थोड़ा समझाएं कि ये सिग्नल्स क्या होते हैं? आप कह रही हैं कि मतलब जब बॉडी सैशिएट होती है या बॉडी को भूख मतलब जब हमारी भूख यानी क्या कहेंगे, भूख मिट जाती है, तो क्या ये तो कोई सिग्नल मिलता है हमें जनरली? इज दैट हाउ इट वर्क्स? So I think like when your body then has been in starvation mode for so long और जब आप उसे खाने को दे रहे हो तो वो एक्सेप्ट करती जाती है कि मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ पता नहीं कल दोबारा खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है। बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months उसको मिलता रहा. उसको रियलाइज हो गया कि अच्छा मुझे नॉर्मल मिल रहा है अब. तो उसने मुझे सिग्नल्स देना शुरू कर दिया जब मेरा स्टमक एक्चुअली फुल होता था कि यू डोंट नीड एनी मोर इट्स फाइन अगली मील में मिल जाएगा दोबारा. सो सही वो है। सिग्नल्स जो है ना फुलनेस के वो मुझे नहीं मिलते थे. आई वुड जस्ट स्टार्ट ईटिंग एंड आई देयर वाज नो स्टॉपिंग टू इट. मुझे खुद रोकना पड़ता था. और आपने जो ये भी बात की कि क्योंकि मुझे पहले टाइम से खाने की आदत थी, मैं सिग्नल, ये क्या, ये मुझे समझाएं आप, ये आइडिया ही समझा दें जरा। Yeah, so if I'm having breakfast at 10 a.m. हम्म, मैं हाफ ब्रेड खा रही हूँ और मैं 1 egg खा रही हूँ. हम्म, मुझे 12 बजे भूख लग रही है. आई वुडंट ईट इट क्योंकि मैंने 3 बजे से पहले नहीं खाना. अगर मैंने पहले खा लिया फिर मुझे बाद में दोबारा जल्दी खाना पड़ेगा. दैट मीन्स आई हैव टू टेक अनदर मील. ठीक सो है, मुझे 3 बजे ही खाना है चाहे मुझे भूख 2 बजे लग रही है मुझे भूख 12 बजे लग रही है. ओके, सही सो है, टाइम बेस्ड ईटिंग मैं करी थी नॉट भूख की बेसिस पे. सो दैट. ठीक।
सो जो अब ये किताब ये कह रही है कि भाई खाते जाएं जब तक भूख नहीं, मतलब जब तक भूख नहीं All मिटती। in, just eat तो whatever you want, whenever you want. सही है, तो फिर आप खा रहे हैं ऑब्वियसली, और एंड देन बट क्या आप वर यू फीलिंग बैड व्हाइल ईटिंग देन, मतलब Oh, I एक felt really bad. अच्छा, I ओके। would feel guilty कि मैंने हम्म इतनी मुश्किलों से लूज किया है, now I'm gaining all of it. मैं रोती थी, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन, they used to tell me it's fine. दुनिया में और बड़े मसले हैं, it's not the end of the world, you're just eating. हाँ Start में gain होगा weight, then you're gonna go back to normal. मैंने मिरर वगैरह रूम से हटा दिए थे because I did not want to see myself gaining the weight. राइट। So initially overshoot हुआ था weight, but then it जब satiric signals मुझे आना शुरू हो गया, I started eating like a normal person. तो वो वापस जो मेरा बॉडी का नेचुरल था उस पे चला गया, एंड सिंस देन अभी तक मेरा उस पे इट्स मेंटेन्ड, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, एनी एफर्ट, वो मेंटेन रहता है. So the body has like a whole like science happening of its own, and मतलब Our हमें body लग is actually really smart, we just हम्म don't know it. हमें लगता है कि हमारा अपनी बॉडी पे इख्तियार है, बट लुक्स लाइक इट्स द अदर वे अराउंड, हाँ। Yeah, yeah, it knows कि उसको कितने फैट परसेंट चाहिए, उसको कितने हार्मोन चाहिए, क्या चाहिए, और वो उसके लिहाज से खुद को एडजस्ट कर लेती है. इवन इफ इट गोज अ लिटिल अप एंड डाउन बीच में, वो खुद ही एडजस्ट कर लेती है उसको. Okay. So this entire journey happened, and you're saying that, and by this time you were still at university जब ये पूरा एक journey चल रही है, like all in वाली, और उसके बाद आप No, I that actually happened, I would say after okay, graduation. सही है, During सही the university, I was still not eating. And then I took it took me a year for Fulbright process to happen. है। So during that time, आई सी। सो फिर जब आप गए वहां पे, और आपकी रिसर्च फिर से, यानी ऑब्वियसली सिर्फ कोई खाने पे तो नहीं थी, आई मीन यू वर एट द अदर डिपार्टमेंट आल्सो डूइंग योर रिसर्च। क्या ये रिस्क था कि अब आप दोबारा से अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं उन्हीं आइडिया से, आप दूसरों को भागता हुआ देख रही हैं, दूसरों के एक कभी कभी खाने भी कंट्रोल कर रही हैं इन इन स्मॉलर वेज, लाइक वाज देयर अ yeah. फियर कि ये तो कुछ दोबारा वापस ना आ जाए, या कुछ थॉट्स ना ट्रिगर हो जाए, या कुछ इस तरह? So I mentioned earlier कि मैंने और दो different labs में I went and related to see if I want to join those labs. One of those labs, uh, it was on eating disorders. So that professor was actually working with people who had eating disorders, उनसे questionnaires वगैरह collect करना और eating behaviors. हम्म And then the second lab, it was on nutrition education, but with people who have diabetes. So that professor in the second lab, she just said to me, "Okay, if you want to join the lab, the other lab, जो eating disorder पे काम करिए, just be mindful, because there were a few people before जिनको eating disorder था, and they worked in that lab, और उससे उनका trigger हुआ, and they got back into it." So I thought about it. I was still also rotating in the third lab, जो Dr. Steven की थी, जिनके साथ फिर मैंने बाद में काम किया था. So what she said, I thought about it, and I knew that I'm alone here. I don't have much help, so it's better if I don't fall back into it. I राइट I only have to look up after myself. राइट राइट राइट। So उस lab को फिर मैंने join नहीं किया. I joined this lab, but alhamdulillah, इसमें भी since there was food और इस तरह की चीजें थी, it never really bothered me या triggered me. So I राइट think I was like totally recovered. मुझे राइट मे बी कभी कभार थॉट्स आई कि ओह नो, यहाँ पे फैट ज्यादा हो रही है, लूज करना है यहाँ पे, बट देन आई डिस्ट्रैक्टेड माई सेल्फ, सो इट वाज राइट। नॉट एज हार्ड एज आई थॉट इट वुड Yeah, बी. yeah, and like I mean, so you are obviously, I mean, thankfully, it's also, it's all your mehnat, man. I mean, you've done it, but you were watching YouTube, you watched the right video. It's like आपकी मेहनत और YouTube algorithm को सलाम है कि आप तक वो वीडियो पहुंच गई। Yeah, I also reached out to the author of that हाँ book. हाँ। I set up a meeting with her just to confirm कि हम्म मुझे अप्रूवल मिल जाए कि आपने ऑल इन जाना है और आपको ये इशू है. राइट। उसके लिए I did some blood tests. I shared with her. She's also a doctor, the author. ओके। So I shared with her. I booked up a slot with her, and she said, she asked me कि क्या food behaviors हैं आपके, जो भी issues हैं. I told her, and then she said, you definitely need to go all in. You seem like you have राइट body dysmorphia and anorexia. राइट राइट And then राइट। there was another blogger, I guess. And she also has another book. I don't remember her name. I also set up a meeting with her.
I told her about what I was going through in detail. She had been through the similar process. Mhm. So I got the confirmation from there as well. I just wanted confirmation from people that I need to eat. Wow. Yeah. Like almost, yeah, almost a permission, huh? Because you Yeah, weren't giving it to yourself, like right. would say. Yeah, so I think that there could be 100 reasons why you're going through a particular thing in your life. Going all in, if it worked for me, doesn't mean it can work for everybody. I think it's always important that you do your own research first. Reach out to the professionals if they're able to help you. Like in my case, I set appointments with the author of the book and another blogger who gave me that confirmation. I shared my test results with them, so it's always important that you do your own research, try to find out what the problem is in your particular case, because I think nobody knows your body better than yourself. So it's always important that you try to figure out the problem and the solution to it. Um, doesn't mean if something worked for other people, it's going to work for you. Right. So it's really important. Right, right. And sometimes like help will come from like people who you found like online, you Yeah, know. it's definitely good to talk to people about it. आपको अपनी options तभी पता चलती हैं when you talk to other people about it who have been through something. But never blindly trust or go with something that somebody else has told you. Just trust your own body and your own mind. Amazing. And I mean, it looks like your family also has been like super like supportive in the process where they also Yeah. like understood the assignment, as we say I these think days. that's also really important if your family is supportive or not. And so, I mean, in your case, it's your family. In some cases, people may have family जो खुद भी कुछ फैट फोबिक हो सकते हैं या थिन Yeah. फोबिक हो सकते हैं तो आई थिंक उस सिचुएशन में आई थिंक दोस्त काम आ सकते हैं perhaps some cousins you know Yeah, I think never just hesitate to reach out to people who you know you can trust or जो आपको हाँ help कर सकते हैं हाँ through that हाँ journey. हाँ और You आई don't थिंक have to include everybody in it, just those people who know हाँ कि वो आपको support करेंगे. एग्जैक्टली मतलब भीड़ इकट्ठे करने की भी कोई जरूरत नहीं है नेसेसरली बिल्कुल. क्योंकि भीड़ अपने ओपिनियन साथ लाती है लेकिन आई मेरे थिंक friends, they were also really supportive. It's नाइस just that I didn't share with them. I know they would एग्जैक्टली have been really supportive. एग्जैक्टली लाइक बिकॉज आपके मतलब आप क्या मतलब उधर उनको पता ही नहीं था कि बिल्कुल. चल क्या रहा है क्योंकि सारी क्रैंकीनेस तो हम ही देख रही थी Exactly. राइट और जब वो all in वाला recover वाला phase आया तो I had already graduated, so I was at home. so no one saw that phase of yours right so I think ये तो खैर incredible behave वो उसकी bravery की भी बात है बहादुरी की बात है कि भाई Yeah, आपने but like खुद भी I did used to meet them और मैं उनको बताती थी कि I'm really overweight, I don't like myself. उनको हम्म मैंने बता दिया था I'm going all in. So whenever I used to meet them, they were really supportive. No, you look amazing. You look so beautiful. They were all really supportive. नाइस 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 नो आई थिंक आई मीन हमें अंदाजा होता है कि हमारी लाइफ में वो लोग कौन हैं जो हमें बिल्ड अप करेंगे सो ऑब्वियसली इट्स इम्पोर्टेंट टू रीच आउट मुझे आप ये बिल्कुल. बताएं कि अगर आपके पास एक जादू की छड़ी हो और पाकिस्तान में सारे लैब के रिसोर्सेज आ जाएं पैसा आ जाए कंसिस्टेंट बिजली आ जाए जो आपके स्पेसिमेंट्स को संभाल के रखे और स्किल्ड लोग भी और आ जाएं मतलब आपके पुराने सुपरवाइजर जैसे बड़े लोग मतलब उन उम्रों के उन एक्सपीरियंसेस के पाकिस्तानी लोग यहाँ पे मौजूद हों और साथ में बेसिकली या पीपल एंड स्किल और सब कुछ हो तो आपको क्या लगता है कि न्यूट्रिशनल साइंसेज में किस किस तरह की रिसर्च आप खुद करना चाहोगी लाइक व्हाट आर द एवरीडे थिंग्स इन पाकिस्तान related to people's behavior around or related to nutrition and their bodies that that bothers you so much that if you would start researching that you would love to study those things. So first of all, I think nutrition education and nutrition behavior, that's something that I want to work on, reaching out to the communities and see के issue किस level पे आ रहा है. First of all, I think it comes at when you're a child. तब से हमारी habits सही तरह build नहीं होती. You're just given anything you want because I think that's how our parents show our love to us कि जो बच्चा कह रहा है खाने को उसको दे दो आप. अगर आप मना कर रहे हो that means you're not showing your love to them, which is wrong. I think उससे उसी का नुकसान हो रहा है if you're giving them brownies or chips or whatever all the time. So nutrition education wala aspect, I think it's really important. Secondly, I think we don't have enough nutrition programs here in Pakistan. Enough, Bini, I don't think we have any. For example, for the low income communities, are we giving them any like
incentives कि आप ये टिकट्स हैं, ये स्टैम्प्स हैं, इससे जाके आप फूड लें और उनको एजुकेट करें कि क्या चीज़ आपके लिए जो है वो बेहतर है. स्कूल्स में हमारे कैंटीन्स वगैरह में जो फूड है दैट्स नॉट हेल्दी, सो स्कूल लंच प्रोग्राम्स वगैरह भी नहीं है. I think maybe the things that I'm talking about there may be a long short, but didn't have to be realistic, right? And then research में of course my interest area is working with people जिनको obesity है, जिनको diabetes है. उसकी रिसर्च करना कि एक्सरसाइज रिलेटेड हो सकती है, वो डिफरेंट डाइट्स हम ट्राई कर सकते हैं, लो कैलोरी, लो कार्ब, whatever works for us, considering in mind जो हमारी लोकल फूड्स हैं उनको माइंड में रखते हुए, बिकॉज अभी जो रिसर्च है वो वेस्टर्न फूड पे है क्योंकि रिसर्च वहाँ पे हुई है. सो हाउ कैन वी इम्प्रूव डाइटरी बिहेवियर्स कीपिंग इन माइंड आवर लोकल फूड्स? That's another thing that I want to work on. सही है. ये लोकल फूड का क्या मतलब है, और ये इसके बारे में मतलब लोगों के मसले लोकल फूड के जरिए ही हेल्प के जरिए ही हल करना क्यों क्यों जरूरी है, ये मुझे आप कॉन्टेक्चुअली थोड़ा सा समझाएं प्लीज. Yeah, so I think food बहुत important है हमारे culture में. It's not something that we just eat. हम अपनी family के साथ बैठते हैं, खाने के लिए बैठते हैं, चाय पी ली हमने, हमारा time pass is having चाय, you know. So I think इन चीज़ों को mind में रखना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई आपको recommend कर रहा है या आप internet से पढ़े हो कि आप grilled chicken खा लो और साथ में vegetables खा लो दिन में 3 दफ़ा, फॉर सम पीपल वो हो सकता है रियलिस्टिक ना हो, बिकॉज अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के कुछ और खा रहे हो, बहुत अच्छा नहीं समझा जाता कि ओ ये अपनी फूड खा रहा है बैठ के. सो इन चीज़ों को माइंड में रखना कि आप जनरली आपकी सोसाइटी में क्या चीज़ प्रेवलेंट है, आपकी फैमिली क्या कर रही है, आपके कल्चर में क्या है, और उसी को फिर इम्प्रूव करना. आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट. आई थिंक मील प्लान्स जो बाहर से आते हैं इम्पोर्टेड, वो तो मुझे तो मतलब दे आर क्रेजी एक्सपेंसिव, लाइक इट दे आर अनरियलिस्टिक. आई मीन इफ यू हैव या डायबिटीज एंड यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग मनी ऑन योर इलाज and then you're expected एग्जैक्टली. to have grilled chicken like राइट. twice a day. I don't know how that's going to happen. मतलब ये तो बहुत अमीरों का एक चोचला समझा जाता है ना यहाँ पे. बिल्कुल. देयर वाज अ टाइम हाँ जब रिसर्च आई कि एवोकाडोज दे आर सो हेल्दी. आई माई सेल्फ फॉर क्रेजी के वो हाँ एवोकाडो में हेल्दी फैट्स हैं, मुझे एवोकाडोज लेने हैं, एंड दे वर सुपर एक्सपेंसिव. हाँ. सो वी तो हैव क्या टू कीप कहते इन हैं, माइंड कि क्या अवेलेबल है हमें. हाँ 2,500 का पता नहीं क्या है आजकल, पता नहीं 2,500 का एक या कोई डेढ़ एवोकाडो पता नहीं. बिल्कुल. सो यू डोंट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो व्हाट द वेस्ट इज ईटिंग. आप उसी को रिप्लेस कर सकते हो विद योर लोकल प्रोडक्ट्स, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है. तो मुझे ये एग्जैक्टली. भी बताएं कि फिर अब आप काम कर रही हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट हैं OIRRC में. Do talk to me about the kind of work you're doing here and how related or in some ways unrelated it is to the degree that you finished. और आपकी जो फील्ड है उसकी अभी यहाँ पर स्कोप तो बहुत है, क्योंकि आपने खुद एग्जांपल दी कि किन किन चीज़ों पे स्टडी हो सकती है, रिसर्च हो सकती है, बट क्या ये काम हो रहा है पाकिस्तान में? किसी छोटे लेवल पे हो रहा है, ज्यादा होने की जरूरत है? व्हाट्स द सीन आफ्टर वन कंप्लीट्स देयर डिग्री इन न्यूट्रिशनल साइंसेज इन पाकिस्तान? या सो 2 years पहले जब मैं फुलब्राइट पे जाने से पहले यहाँ पे थी, तब क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, आई वुड से. अभी जब मैं वापस आई हूँ, देयर आर फ्यू कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ओपन हुई हैं. आई नो अबाउट लाइक 4 or 5 जो कि इन 2 years में दे हैव ओपनड अप इन ओह पाकिस्तान. ओके. बट उनका भी पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हो रहे. बहुत कम, आई वुड से लाइक 4 to 5 मे बी, जितनी मेरी नॉलेज है, एज पर माई नॉलेज. और वो जो है वो अभी कोविड पे ही हो रहे हैं, कोविड रिलेटेड है वो. ओके. नथिंग ऑन लाइक न्यूट्रिशन और इन माय फील्ड. सो जो ट्रायल्स हो रहे हैं उन पे तो काम हो रहा है, बट उसके अलावा जो ये CROs वगैरह खुले हुए हैं, या माय ऑर्गेनाइजेशन, वी गेट द डेटा फ्रॉम द ट्रायल्स दैट आर हैपनिंग इन मे बी US और यूरोप, जिधर से भी, जो भी उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिधर भी हैं. सो करंटली लाइक इन पाकिस्तान मेरी फील्ड में क्लिनिकल रिसर्च बिल्कुल भी नहीं है. जितना लाइक आई हैव रिसर्च ऑन उसमें नहीं है. सो व्हाट आई डू here at my organization, I would say the field that's not relatable to me, but the skills, they are very much relatable to what I've done previously. So in that regard, I would say जो आपकी first organization आपको chance देती है,
that's really helpful for you. I would totally agree to it. क्योंकि मेरी field different थी, but they still gave me a chance to be a Mhm. part of it. So basically what happens is they have their lab in Stanford, और जो US में या यूरोप में जो भी clinical trials वगैरह हो रहे हैं उसका डेटा मिलता है, एंड आई वर्क एज स्किल्स जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं, ठीक प्रोजेक्ट है, मैनेजर, आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर विद इन माय कंपनी. ठीक है, सही है. So basically we get the data, उसको हमने जो है वो different teams हैं उनसे I would say data analysis करानी होती है, and when we completely get the data back तो हम वो वापस भेज देते हैं जहाँ से वो जिन ट्रायल से, जिन साइट से, जिन स्पॉन्सर से आता है. So we सही get है. the data, we get it analyzed or whatever हम्म, we have to do with it, and then we give it back to them. करेंगे. It's related to ophthalmology. So Okay. eye diseases हैं जितने भी उस पे ट्रायल्स रन हो रहे हैं, जो ड्रग्स वगैरह यूज हो रहे हैं उससे रिलेटेड रिसर्च चल रही है. I see. So I really hope, Habiba, that you do great at the work that you're doing right now. अभी project management चल रही है. I hope you're also secretly studying more data analysis. कि किस तरह से क्या run किया जा रहा है as you manage teams. But I really, really, I mean, this is just the beginning. Obviously, man, it's just been a few months that you did, like that you started working. It's only been 6 months that you came. So अभी तो हमें आराम से टेक लगा के बैठ के देखना है of all, like we just have to see all about, like, we can't wait to see like all the wonderful things that you're going to do. And as you said कि इसमें अभी clinical research कम हो रही है, but we hope that you will Fingers play. crossed. No, inshallah, like you will play a part in bringing more of it to Pakistan. I think obviously we have so much expectations of Pakistan in general, but also, I mean, yes, so many things could have been done correctly, and so many things were done the right way in the beginning, and then things have fallen, like, out of place. But also, um, तो काफी कम रिसोर्सेज हैं इस मुल्क में, तो आई थिंक हम ये भी कभी कभी हमारे जहन से निकल जाता है ना कि इस चीजों को यहाँ लाने में भी मेहनत लगती है, एंड वी नीड पीपल हु कैन Sure. who can do that, and it takes time, like it takes decades. So I hope you never feel like uh, oh ये तो मतलब ये तो बस नहीं है, और अब ये पता नहीं कौन करेगा, because you never know, like you might be one of the people who play a Yeah, huge part in it. But uh, definitely. as we end this conversation, I mean, obviously, I want to thank you so much for taking out your time and sharing, your amazing story with us. But what would you say to people who are listening to you right now? आपके parting words क्या होंगे? Yeah, so first of all, I totally agree. I think किसी भी चीज को build करने में time लगता है. I expect good things from Pakistan. As I mentioned, 2 years पहले, none of these organizations were here, but now they are actually working in Pakistan right now. So I do expect in the future good things regarding to the nutrition field. I see a few departments being made for food science. For nutrition, I think there's a long way to go, but definitely it's going to happen one day. And we are the youth, so we have to make this happen, inshallah. And as for the parting words for the people out there, I just want to say that once you have achieved your dream, you are in the US, you're living your dream, just don't I would say just don't waste that time, just make the most of it. Never hesitate to reach out people for help. I think I made the mistake of not reaching out to people initially. I felt I was all alone in this by myself. I don't have people. I felt lonely, which is not true. There is always somebody out there to help you, who is willing to help you out. So just I would say make the most of this time. Just don't focus on study and research and just sitting in the lab all the time, working on your laptop all the time. um, Explore the world. US is so big, it's for you to explore the world, and make the most of it, ताकि बाद में regret ना हो कोई भी. Okay, so our nutritional sciences researcher is telling us to party, basically. Yeah, I love to travel and Huh, explore, and I think I went to around 12 states huh, in two amazing. years, or maybe Yeah. less, 1 year, 10 months. Huh, I could have done more if I reached out to more people. I So see. don't repeat the same mistakes that I did. Just Hmm. never say no to a plan.
Oh, amazing. That's a great that's a great tip. I completely like agree with it, honestly. Never say no to a plan. Um, and like, I mean, I want to say this because I want to like appreciate this tip, because never say no to a plan, because after some years you won't have the energy Yeah. to say yes to a plan. And I mean, at the age that you are, like, I mean, your body supports you. Do it, please. Yeah, and also that Fulbright is paying you, so you have a constant source of type stipend coming in. Exactly. So just Exactly. use that. Just Which is use it. such a huge privilege as compared to people who are like, हमारे अपने classmates वहाँ पे होते थे जो अपनी बिल्कुल. jobs भी कर रहे होते थे, और फिर वो भी तो Yeah, काफी अय्याशी they were एक्चुअली होती थी. always just saving up कि हम अब ये ले लें या ये ले लें. As a Fulbright student, I हाँ. think we're privileged in that sense कि हमारी savings भी हो जाती हैं, हम घूम फिर भी सकते हैं और हम अपनी ख्वाहिशात सारी पूरी कर सकते हैं. I think मैंने बहुत अपनी ख्वाहिशात पूरी की हैं. Amazing. मैं when I came back, I had no savings with me, but I have no regrets. Oh my God, that's amazing. That is so wonderful, coming from a young woman. That's just amazing, honestly. But thank you so much, Habiba. Thank you for all of your time and all of your wonderful achievements and all of your wonderful stories. Or I mean, I'm so excited to see like all that you do in future. So thank you so much. Thank you so much for having me. It was really nice sharing all this with you. So thank you so much.